Welcome to SCA Academy online platform. We are again welcome to all the students who are attending the live lectures or recorded lectures in SCA Academy. In previous lecture, we discussed about the science lecture from class 7th. The name is heat. In previous lecture, this is the second lecture for the heat chapter, and this is a very important chapter. Or also the at that time we discuss about the heat and temperature, the difference between the heat and temperature. We already discussed in the previous lecture. What is the exact meaning of the heat and the temperature, we discussed in the previous lecture also. This is our second lecture. इसके पहले हमने देखा था कि अगर हीट और जो टेम्परेचर है इनके बारे में जो डिफरेंस है वी ऑलरेडी डिस्कस, and this page also we covered line by line, we covered in a previous lecture. Till here answer some of these questions till we completed in a previous lecture. After that we discuss about the hot and cold. It's a 4.1 hot and cold. Let's read first line by line. In our day-to-day life we come across a number of objects. Some of them are hot. In our day-to-day life we see many objects. Some objects are hot, some objects are cold. Some objects are hot or some objects are cold. How will you analyze in our day-to-day life? How will you analyze the substance? One substance is cold, another substance is hot. How will you analyze? By using our skin. By our skin we can analyze this object is hot, this object is cold. In our day-to-day life there are so many things are present in our day-to-day life. Sorry. For example, when we take a cup of tea, it means that the cup of tea or the tea is hot. We can sense it by using our skin. When we take out some water from the fridge, or when we take out the bottles from the fridge to drink water, that water we have to analyze it. So cold object by using our skin. स्किन से हम एनालाइज कर सकते हैं some objects are hot और some objects cold. लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर हॉट है, कोई ऑब्जेक्ट अगर कोल्ड है, तो हमें ये कौन बताता है? उसका टेम्परेचर बताता है. दैट टेम्परेचर गिव्स आइडिया अबाउट द हाउ द ऑब्जेक्ट इज कोल्ड और हाउ द ऑब्जेक्ट्स आर हॉट. टेम्परेचर इज हॉट. In previous lecture we discussed about the definition for the temperature. Temperature is nothing but is the degree. It's the degree or it's the level. It's the degree or it's the level of that object is the hotness. Hotness का level है. अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट को हम मानते हैं कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है तो उसका लेवल कितना होगा, डिग्री कितना होगा? दैट डिग्री आर शोन बाय द टेम्परेचर. टेम्परेचर शोन द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड द डिग्री ऑफ कोल्डनेस आल्सो. टेम्परेचर से पता चलता है. ओके, इन आवर डे टू डे लाइफ while you going there are some in your textbook there is a table. That table shows that hot and cold objects, some objects are depicted here or some objects are names is there. Some first object is the ice cream. Ice cream, we know that the ice cream is hot or cold. Yeah, definitely ice cream is a cold. Ice cream is a cold object. Ice cream is a cold. Spoon in a tea cup. एक स्पून लिया है हमने, वो टी कप में डाला है. That spoon is a hot or warm. What is the difference between the warm and hot? Hot means the object gives the degree or the gives the temperature. तो यहाँ पे अगर हमने कोई स्पून अगर किसी टी कप में डाला है, हमें मालूम होता है कि टी कैसी होती है, हॉट होती है, तो इसका मतलब जो स्पून भी होगा वो कैसा होगा? थोड़ा सा हॉट होगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव द फ्रूट जूस. वी नो दैट द फ्रूट जूस इज cold. It's not hot. Fruit juice is the cold. Handle of the frying pan. Handle of the frying pan. Frying pan का जो handle होता है, that are definitely are we can talk about the frying pan. That frying pan, if they are, these frying pans are coated with insulated material. अगर मैं हम जो frying pan यूज कर रहे हैं, अगर वो coated अगर होता है किसी मटेरियल से, वो भी कैसा होना चाहिए? इंसुलेटर. अगर इंसुलेटर से कोटेड है तो डेफिनेटली इट कूल्ड. बट इट दैट हैंडल और दैट फ्राइंग पैन हैंडल आर नॉट कोटेड, तो डेफिनेटली इट कैन बी हॉट.
वो कैसा हो सकता है, हॉट हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नाउ डेज द फ्राइंग पैन आर टू बी यूज आर कोटेड विद इंसुलेटेड मटेरियल। इंसुलेटेड मटेरियल से कैसे होते हैं, वो कोटेड होते हैं, इसकी वजह से हमें वो जो हॉटनेस का जो फील है, हॉटनेस का जो हमें महसूस करना चाहिए, वो हमें पता नहीं चलता कि कोटेड की वजह से। इफ अगर कोटेड नहीं होता है तो इट कैन बी डेफिनेटली क्या होगा, इट्स हॉट। फॉर एग्जाम्पल when we see to making a bakery products or to making some cooking products as like some sweet dishes is there, and that for making they use some iron handle is there, and that iron handle are covered with some cloths. That iron handles are some covered with the cloths. Why they are covered with the cloths? Because that handle should be the hot due to the presence of oil in that container. उस ऑयल में जब भी हम वो पैन अगर डुबाते हैं तो बाद में हमें पता चलता है कि उसका जो आउटर कवरिंग है, उसका जो हैंडल है, वो कैसा होगा, हॉट होगा। इसकी वजह से उसको कपड़े से बांधा जाता है। तो इसका मतलब वो अगर हम फ्राइंग पैन यूज करते हैं तो डेफिनेटली वो कैसा होगा, हॉट होगा। एज डेफिनेटली वो कैसा होगा, हॉट होगा। अगर वो इंसुलेटेड है तो वी कैन से दैट इट्स अ नॉर्मल टेम्परेचर, इट्स अ कूल। So these are some objects are mentioned in your textbook according to analyze which one object is a hot or which one object is a cold by using the sensation only. We not talk about by other instrument are to be used to check the temperature, to check the degree of that hotness. इसकी हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम ओनली बात करें by the using only the sense, by using the skin only. स्किन से ही हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा कोल्ड है। यहाँ पे टेबल नंबर 4.1 hot and cold object, you have to identify, you have to analyze only the objects. Okay, next next पे line by line, and some of them are cold, tea is hot and ice is a cold. Yes, we know that tea is a hot and ice is a cold by giving only the skin face. skin की मदद से we can to identify which one object is a hot and which one object is a cold. List some objects you use commonly in a table 4.1. Mark these objects as a hot or cold. In previous slide, there is a one box is there. Okay, one box is there. Some 1, 2, 3, 4, 5. 5 objects are kept here only, and you have to analyze only the 5 objects. According to you, you can choose another objects. You have to identify another object. You can choose any object which is a cold or hot, and you make a chart for that. Which one is a cold, which one is a hot, you can make your own. आप खुद से ही बना सकते हैं। ये जो दिया है यहाँ पे इतने, ये ऑब्जेक्ट छोड़ के अदर भी ऑब्जेक्ट जो है आपके डेली लाइफ की जो यूज में जो भी ऑब्जेक्ट्स है, यू कैन एनालाइज दिस ऑब्जेक्ट्स आल्सो एंड मेक अ चार्ट लाइक दिस। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, अनदर इज द कोल्ड और हॉट। ये कॉलम बना के आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हो कि कौन से ऑब्जेक्ट हॉट है एंड कौन से कोल्ड है बाय यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट्स। सॉरी, do not touch objects which are too hot. Be careful while handling a candle flame or a stove. ये सब चीजें when we check the object where is the hot or where is the cold, we have to clear one thing is that some objects can be harm to your skin also. They are too hot, as like they mention the flame, candle flame. You know the candle, you know the candle flame. Candle flame, when you touch the candle flame, it can be burn your hands or burn your fingers. So we have to careful that if we touch any object, you have to careful that the hotness of that object. कि ऐसा नहीं है कि कहा है कि हमें ऑब्जेक्ट चेक करना है कौन सा हॉट है कौन सा कोल्ड है तो चाहे कौन से भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हाथ लगे चेक करेंगे। नो, दिस इज नॉट अ राइट वे। दिस इज नॉट अ राइट वे टू चेक द टेम्परेचर और टू चेक whether the object is cold or hot. This is not a right technique. You have to careful about that. For example, do not touch the candle flame. Also, do not touch the, because we know that the candle flame is too hot, and also the stove also the too hot. Not to analyze by using the skin also, by using the skin touch also, we cannot analyze these objects because these objects can harm your skin also, can harm your finger also. So be careful that this box here give the warning for that, so the students cannot be checked like the objects by using the skin also. We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than the others while some are colder than the other.
How do we decide which object is hotter than the other? We often do it by touching the objects, but is our sense of a touch it's reliable? Let us find out. Yes, this line or these paragraphs they mention that is it right or is it right when we check the object is hot or the cold by using the skin or by using the touch? It is the reliable. Reliable means it is give the accurate measurement of that hotness of the coldness of the object. By using only touch, we cannot analyze what is the degree of that temperature. कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है कितना कोल्ड है इसके अंदर जो लेवल है और द डिग्री ऑफ दैट टेम्परेचर वी कैन नॉट एनालाइज बाय यूजिंग ओनली द टच. टच से हम एनालाइज नहीं कर सकते कि उसकी लेवल कितनी है. टच से इतना पता किया जा सकता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है कौन सा हॉट है, इतना ही हम बता सकते हैं. लेकिन उसकी इंटेंसिटी यानी उसका ग्रेड उसकी लेवल उस टेम्परेचर की लेवल कितनी है वी कैन नॉट आइडेंटिफाई यूजिंग ओनली द टच. सो द रिलायबल मींस इज द ट्रू. ऐसा करना सही होगा क्या? ऐसा करना हर एक चीज के लिए सही होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्लेम को टच करता हूं, इसका बर्न. सो हाउ आई एनालाइज द कैंडल फ्लेम इज टू हॉट. वो कितनी हॉट होगी किसके कंपैरिजन में? कैंडल की फ्लेम किसके कंपैरिजन में कितनी ज्यादा हॉट होगी? हाउ टू एनालाइज? बाय यूजिंग ओनली द सेंस और बाय यूजिंग ओनली टच वी कैन नॉट एनालाइज. सो द ओनली टच मेथड, टच करने से ही कौन सी ऑब्जेक्ट की हमें हॉटनेस और कोल्डनेस पता नहीं चलती है. इतना ही पता चलेगा कि हॉट है या कोल्ड है. एंड सम केसेस आल्सो, नॉट ऑल द केसेस, सबके सब केसेस में सबके सब ऑब्जेक्ट्स में हम ऐसा नहीं कर सकते. हम एग्जांपल से देख चुके हैं कि व्हाट इज द कैंडल फ्लेम ज्यादा हॉट होती है, हम टच करके नहीं बता सकते. तो कैसे पता किया जाए सर? हमें किसी ऑब्जेक्ट, अगर आप कहते हो किसी ऑब्जेक्ट कोल्ड है किसी कोई ऑब्जेक्ट अगर हॉट है तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज टू कोल्ड और टू हॉट? कंपैरिजन तो करना पड़ेगा ना कि अगर मैं बता रहा हूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, आई हैव वन ऑब्जेक्ट इट्स अ हॉट, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो भी हॉट है, लेकिन दोनों में अगर मुझे चूज करना है कि कौन सा अगर सबसे ज्यादा हॉट है, उसकी ग्रेड लेवल टेम्परेचर उसका कौन से ऑब्जेक्ट का अगर ज्यादा है, हाउ विल आइडेंटिफाई? टचिंग मेथड से. इट नॉट पॉसिबल, इट नॉट रिलायबल, ये रिलायबल नहीं होगा. एंड दैट कैन बी प्रूव बाय यूजिंग दिस एक्टिविटी. इस एक्टिविटी से हमें पता चलेगा कि ओनली टच करने से, फील करने से वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ दैट हॉट ऑब्जेक्ट एंड द कोल्ड ऑब्जेक्ट. फॉर दैट वी हैव टू रीड द एक्टिविटी. एक्टिविटी नंबर 4.1, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. You also go through that all the activities. One thing I clear you all the students. When we read the chapters of any chapter from the science also, first chapter, second chapter, third chapter, fourth chapter, when we reading the chapters, you observe carefully the activities because activities are very important. That activities are mentioned in your textbook. There is some reason behind that. You have to analyze practically. You have to analyze the concepts. प्रैक्टिकली आपको क्या करना पड़ेगा? कंसेप्ट को एनालाइज करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज. सो द एक्टिविटीज आर प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट बुक. ऑल द एक्टिविटीज, ईच एंड एवरी एक्टिविटीज यू हैव टू परफॉर्म. यू हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी लाइन फ्रॉम दैट एक्टिविटीज बिकॉज एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट also for your exams point of view and also in higher standards. Higher standard also the activities are important because they are mentioned in your textbook also, and it is a very good thing when we teach or when we study about the science. Go with the activities. Without activity we cannot conclude the concept or we cannot analyze the concepts without activity. So the activities are very important for to analyze. Activity number 4.1 is there. We have to read only the activity what mentioned in their activities. First of all we start with the activities. Sorry for that. Take 3 small tubes. Take 3 small tubes. You can take only the 3 small tubes, or you can take the 3 small cups also. You can take also the mugs also. You can take the 3 tubes, containers, label them as A, B and C. हमने 3 कंटेनर लेना है. फर्स्ट को मेंशन करना है A, दूसरे को B, तीसरे को C. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके,
पुट अ कोल्ड वाटर इन अ मग ए, मग ए में हमें कौन सा वाटर चाहिए, इट्स अ कोल्ड वाटर, कौन सा वाटर, कोल्ड, यहां पे लिखो कोल्ड वाटर, इट्स अ कोल्ड वाटर, ओके इट्स अ कोल्ड वाटर, एंड हॉट वाटर इन अ मग बी, मग बी में कौन सा वाटर लेना है, hot water, it's a hot water, it's a hot water, okay, according to this activity mug A and hot water in a mug B mix, इनको मिक्स करना है, make sure that water is not so hot then you burn your hands, yes you have to careful for that, if you take the hot water so carefully by mixing that, that hot water is not too much hot, it can burn your skin also, okay, after that say some cold water in a mug C, मग सी में क्या लेना है, कोल्ड वाटर, नाउ डीप योर लेफ्ट हैंड इन अ मग ए एंड द राइट हैंड इन अ मग बी, आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन अ टू मग्स फॉर 2-3 minutes, put both the hands simultaneously in a mug C, in a mug C you have to put both the hands in a mug C, क्या कहा है देखो यहां पर, मग ए एंड अनदर वन इज अ मग बी, ए में हमें क्या लिया था, ए एंड बी इज देयर, पुट अ कोल्ड वाटर इन अ मग ए, मग ए ने हमने क्या लिया था, कोल्ड वाटर लिया था, बी में हमने क्या लिया था, बी कोल्ड वाटर, एंड हॉट वाटर इन अ मग बी, मग बी ने कैसा लिया था, बी वाटर लिया था, ओके, आफ्टर दैट मिक्स, मिक्स करना है दोनों को, आफ्टर मिक्स सम कोल्ड वाटर इन अ मग सी, मग सी में कोल्ड वाटर मिक्स करना है, तो फर्स्ट यू डीप योर राइट हैंड इन अ मग बी, मग ए एंड मग बी, अगर फॉर एग्जांपल वी कैन, हमने यहां पे एक हॉट ऑब्जेक्ट लिया है, दूसरा कोल्ड है, ए एंड दिस इज द बी, ए एंड दिस इज द बी, अगर ये है हमारे पास तो यहाँ पे हमने कोल्ड वाटर लिया है, कोल्ड वाटर है, कोल्ड, यहाँ पे हमने लिया है बी, लिया है बी, यहाँ पे लिया है हॉट, यहाँ पे क्या लिया है, हॉट, ओके, इन दोनों को मिक्स करके यहां पे हमने क्या कर लिया है, एक सी लिया है विच इज अ कोल्ड वाटर, ये कौन सा है, कोल्ड वाटर है, क्या है, कोल्ड वाटर, तो अगर हम राइट हैंड इसमें डीप करते हैं, लेफ्ट हैंड अगर इसमें डीप करते हैं, तो लेफ्ट हैंड शोज द हॉट, हॉट दिखाएगा, राइट हैंड हमें क्या दिखाएगा, इट्स अ कोल्ड, ये क्या है, कोल्ड है, ओके, अगर हमने ये जो सी यहां पे लिया है, यहां पे क्या था, यहां पे कोल्ड वाटर प्लस हॉट वाटर दोनों का क्या किया था, मिक्स किया था, मिक्स, अगर हम ये दोनों कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम व्हेन बोथ द हैंड्स वी केप्ट साइमल्टेनियसली इन अ मग सी, मग सी में अगर दोनों भी हाथ अगर हम रखते हैं, दोनों भी हाथ अगर हम रखते हैं, तो इसका जो टेम्परेचर था वो कैसा था, मिक्स था दोनों का, हॉट भी था कोल्ड भी था, हॉट भी था कोल्ड भी था, लेकिन हमारे जो हैंड्स है, दैट हैंड्स आर शोइंग डिफरेंट, that hand showing the different temperature, one right hand shows the cold and left hand shows the hot, but the temperature of these mugs see are same, एक ऐसा था, ये दोनों का मिक्स था, सम वाटर कोल्ड भी था सम हॉट भी था, इससे हमें ये एनालाइज होता है, by giving only the touch we cannot analyze or we cannot identify which one object is the hot or which is the cold, or we cannot conclude that the hotness of that object, वो कितना hot है, किसके कंपैरिजन में hot है, by using only touch we cannot analyze, we cannot identify the temperature or the hotness or the coldness of the object by using only touch, so यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था फर्स्ट लाइन पे, by touching the object but is our sense of touch reliable, reliable का मैंने कहा ये सही होगा क्या, it give the better idea for that, no, by giving the touch it get not the better idea for that, so from this activity we can identify or we can to analyze, we cannot identify the temperature of the hot object and the cold object, or we cannot identify the hotness or the degree of that temperature or level of that temperature by using a touch only, so the activities are very important, so we have to analyze the activity number 4.1 we can analyze here only by giving idea about how the temperatures are to be different, both the hands show the different temperature, one hand show hot temperature, one hand show
cold temperature, but the mug C contain both the waters. The mixture of both the water, the temperature are the same. So feeling of both the hands are to be same. Why they are showing different temperature? One is hot and one is cold. Due to that, our sense, our touching sense is not reliable. ये क्या नहीं होगा? ये reliable नहीं होगा. Yes, okay. From this activity, we cover here only 4.1 activity, which is very important. Hope I have to understand all the students. If you are any doubts, you can ask in a comment section. Today, आज के लिए इतना ही. कल के नेक्स्ट लेक्चर में आगे का हम डिस्कस कर लेंगे. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू.